अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज आवर 28th प्रोफेशनल वेबिनार जिसमें आप सबको हम खुशामदीद कहते हैं। टाइमिंग की चेंजिंग की वजह से कुछ हमें लग रहा है कि हमारी ऑडियंस इस पर खुश नहीं रही। नेक्स्ट टाइम वी विल डेफिनेटली लुक इनटू इट। आज का हमारा मौजू, एज यू नो, नेविगेटिंग 2023 एंड रेडीनेस फॉर 24। ज़ाहिर तो ये ज़रा घिसा पिटा मौजू लगता है कि साल के एंड पे मोस्ट ऑफ द प्रोफेशनल्स टॉकिंग अबाउट दिस। लिंक्डइन और बाकी जो मीडियम्स हैं उस पर भी हमें बहुत कुछ देखने को मिलता है, बट listening advice from the professionals who have spent quite splendid career inside Pakistan and outside, और जो एज ए स्टूडेंट, एज अ प्रोफेशनल, एज अ वर्किंग पर्सन एक अपनी हिस्ट्री रखते हैं, उससे यकीन बहुत फर्क पड़ता है। तो आज लकीली हमारे साथ हैं डॉक्टर सैयद उज़ार गनी साहब। डॉक्टर साहब इज़ अ हाईली एक्सपीरियंस्ड एंड accomplished professional in the field of healthcare, life sciences, and personal coaching and organizational development. Dr. Ghani has a proven track record of excellence in strategic planning, research, product development, formulating strategies as well. आपका पाकिस्तान में पाकिस्तान से बाहर बहुत काम है। नाउ डेज ही इज इन कनाडा। पाकिस्तान आए थे तो वी फ्रीज द मोमेंट एंड ग्रैब्ड हिज सम टाइम to stay with us. He is also a founding director of ASK Development. He has led global marketing services and subsidiary global biotech and consulting for IFC, World Bank. He has also launched the leading in vitro diagnostic and pharmaceutical multinational in Pakistan. और हमारे साथ हैं जनाब फराज असलम साहब। ही इज़ वेरी फेमस and known person in HR circles and organizational development in Pakistan. He is a leadership, HR, management, and OD consultant, and one of those I trust them. They are genuinely people who are helping others and genuine services are offering in Pakistan. So he has a background in organizational development, counseling, psychology. He has over 2 decades of rounded experience in leading multinational organizations within Pakistan, Europe, Asia Pacific, Middle East, and Africa zones. Mr. Fraz is also co-founder and country advisor council member of the Pakistan Human Capital Forum. He is a qualified director and a former member of the Overseas Chamber of Commerce and Industry. Least not the last, Mr. Khurram Ali Khan, COO ASK, and our audience knows him very well. He's a financial management expert, HR professional, has worked in Pakistan and outside Pakistan as well, spent quite some time in the Middle East, and he brought with him a wealth of experience to help individuals in Pakistan. तो बिफोर वी स्टार्ट आई वांट टू से वन सेंटेंस कि देखें, इस आज के वेबिनार से आप तभी फायदा उठा सकते हैं इफ यू आर रेडी फॉर ए चेंज। अगर आप अपनी जिंदगी में कोई चीज लाना ही नहीं चाहते, जैसा है बस वैसे ही चलना है, तो फिर शायद आज की जो हमारी गुफ्तगू है वो आपके काम नहीं आएगी। सो विल इज फर्स्ट एंड देन दी ट्रीटमेंट। तो एज यू नो अवर फॉर्मेट इज कि हम पहले अपने मेहमानों से गुजारिश करते हैं। तो डॉक्टर साहब, एज ए सीनियर मोस्ट, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज स्टार्ट। Assalamu alaikum ji, and वालेकुम। good evening everybody. So it is indeed a pleasure to be here and to talk to you. Fortunately, and by virtue of just an opportunity, I was in North America when the COVID struck. So I personally witnessed all the happenings starting from 2020 up to currently 2024. And at the same time, I am living in financial district in Toronto, which is probably the fourth largest metropolis in North America. In the past, I have been traveling and stayed in Australia, UK, US. So I have
some background knowledge, and I have seen the organization, their behavior, the changes in 2023. To begin with, it's going to be bilingual, I was told by Akif जी just जी recently. So I'm in touch with the industry as well as the academia, the education, so both ends of the workforce. So in the recent past, I have seen many changes happening. And a quick overview is like I have seen the technological advancement during the COVID time, which was a compulsion. So sorry, pardon me if I'm going too much in English. लेकिन ये था कि टेक्नोलॉजी की जो एडवांसमेंट हुई इस दौरान में वो फिनोमिनल हुई. We have seen the automation, we have seen the artificial intelligence, its usage, and remote work trends. And then, after 2022, very slow pandemic recovery, uh, and the change in economy. There were supply chain issues way back during the COVID time, and then there was a sudden growth in the workforce market. And last year, like Canada accepted over 1 million immigrants. So that was a big change and a big shift in the population. And now I'm from a place where, they encourage the green economy. There were serious On challenges in 2023, and they are continue as of today, like the aging workforce, which is not the case in Pakistan at all. So majority of the population is a young one, but there was a zigzag movement in economics, like the economic fluctuation and market condition, they were changing. There is an impact of globalization, and then the digitization of all the function, which led to the cyber security issues. And then there was a change in healthcare demand, and there was a big data which was coming, and how to manipulate and take advantage of that big data. E-commerce growth, which was phenomenal, and then there was a downside, like Amazon. We have seen they laid off thousands of people in North America. Then came the question of sustainability, post-COVID area. The government, they changed their policies, and the digital transformation continues uninterrupted. So that was going to impact the education and training and the careers. So now there is a big focus to the practical training. Organization, they are much less interested in the degrees. So in Pakistan, there is a very strong education sector, which is promoting a continuous education without any experience. Now the organization, they are interested in plug and play. If you can deliver, you are welcome. So it's not that if you are having a PhD, just to correlate, I'm sorry to say, when I was in Australia, in Adelaide, there was just very few jobs for the PhD. From Pakistan, I remember like group of 8 or 10 PhDs, their first job was to start a career as a cleaning person. So that is the response from the degree. So that shows highlight. And the IBM top man in Australia was a high school graduate. Even my son works for Microsoft in North America. So there is a strong transformation. So that was a very quick review of 2023. So the time is very limited. But I can see, I would just close this opening remark by saying that Economist Intelligence Report is released every year. So before 2019, they were mentioning in the macro factors, primarily all other things, and the risk analysis, particularly for the US, that they are very much geared for all types of risk, but there was no mention of health. And when the COVID struck and everything went down, so, then there are unforeseen things which are happening. And I have seen, and I was at that time, I was traveling to Pakistan, going back, and you all familiar with everything. So that is the stage to start 2024. And we will continue ग्रेट. this अच्छा डॉक्टर साहब, discussion. इसको आप पर्सनल डेवलपमेंट से कैसे कोरिलेट करेंगे? आपने बड़ा अच्छा हमें सिनेरियो दिया है ग्लोबल
और किस तरह के स्किल सेट वो देख रहे हैं। तो हमारे जो प्रोफेशनल्स हैं, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, यंग लोग हैं और इसमें मिड लेवल लोग भी हैं, तो व्हाट यू एडवाइस देम? आई थिंक नाउ जी। जो जिसे हम कहते हैं, अब नॉलेज किसी की मीरास नहीं है, रिसोर्सेज ठीक है। आर नॉट इम्पॉर्टेंट, यू नो, इट इज नाउ वेरी मच लिबरलाइज्ड एंड जस्टिफाइड, एंड यू नो इट इज अवेलेबल टू ऑल ऑफ यू। आई मीन, मैं तो चूंकि पढ़ाता भी हूँ, फैकल्टी भी हूँ, नाउ जी। एवरीथिंग इज इन योर एक्सेस, लाइक द कोर्सेरा, लाइक द यूडेमी, everything. If you want to upgrade your skills from the best universities, there are open sources. You can upgrade your skill provided you know and understand the difference between two things: efficiency and effectiveness. Effectiveness mean doing the right thing. Efficiency mean doing the things in a right way. So you should know where the job market is going, where the skills are, demand, supply, how it's going to shift, and you can upscale yourself. Number one, you can rescale your skill set. So primarily, I'm part of an institution where the ओके। primary mandate is the same in Toronto, that they are upskilling, reskilling, and the vocational training. They are the three Right. prongs Thank of it. you. Thank you, Dr. Sir. Upskilling, reskilling, and having an eye on the job market. This is the learning. Thank you very much. Faraz Aslam Saab. Sir, Gigi, please. Now, we are eager to listen to you. all right. Thank you very much, Arshad Saab. I think, first of all, I would like to once again thank you for inviting me for this very interesting webinar series. I remember even last year we did one very interesting program. So first thing first, it's a great initiative by Ask and by yourself to host such webinars, such learning and sharing forums is quintessential in today's world. So when I was reflecting upon the topic, I actually thought that it's actually not only relevant to 2023 and 2024, but it's actually True. beyond that. And so just briefly about myself, as you've already introduced me, I have a background in psychology. I'm a professional psychologist. So I have been practicing counseling psychology as well as organizational psychology. Alongside, I then moved into corporate sector in human resources. And so my lens, the way I look at 2023 and 2024 is slightly, I mean, coming from this side of the, let's say, world or space. Because generally जब हम बात करते हैं कि यार 2023 कैसा था, तो एक तो जनरल परसेप्शन है जो कि शायद किसी सेक्टर के हवाले से कॉर्पोरेट में या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में, एनजीओज में या इस तरह के इदारों में या पर्सनल लाइफ में कुछ भी हो सकती है। फिर सही। उसका एक जो है टिपिकल कॉर्पोरेट एंगल है या ऑर्गेनाइजेशनल एंगल है। तो मेरी जो ज़्यादा गुफ्तगू होगी या ज़्यादा जो मेरा फोकस होगा वो दो डायमेंशंस पे होगा, एक पर्सनल जो सेल्फ जिसे मैं कहूँगा, और दूसरा जो है ऑर्गेनाइजेशनल। वेरी इंटरेस्टिंगली जो 2023 है मैं उसको समझता हूँ कि दैट्स बेसिकली द beginning of a new era. Post-COVID, we all know that COVID was a very different atmosphere and environment. But as soon as we moved out of COVID, so we actually had some learnings from the COVID era, which Dr. Uzair has already mentioned very, very comprehensively. But that changed the world for better, of course. But this era, which actually starts from 2023, is essentially different from what happened in 2021 or 2022. Why? Because first thing first, that the learnings were now coming into full action implementation. We were listening about the talk that when the COVID finishes, this will happen, that will happen to human beings, to their behaviors, to their relationships, to their self-image, to the self-concept. And that started happening so rapidly that हम उसके रिजल्ट्स जो हैं वो अब देख रहे हैं कि किस तरह से कुछ टॉपिक्स जो हैं, स्पेशली अगर स्किल्स के हवाले से हम बात करें, तो कितनी जल्दी उन्होंने उन स्किल्स ने सरफेस किया है। उनमें से अभी अगर हम टॉप 10 स्किल्स की बात करें तो उसके अंदर डेफिनेटली वी सी दैट जो सॉफ्ट स्किल्स हैं उन्होंने टेक्निकल स्किल्स के साथ दूसरे नंबर पर आती हैं। अगर हम बात करें कि जी जो 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 लेट्स से जो टॉप 10 में जो लिस्ट पे नंबर 1 पे होगी, वो इसेंशली वो स्किल है जिसे हम डिजिटलाइजेशन कहते हैं।
एंड उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, चैट जीपीटी है, और उस तरह की बहुत सारी चीज़ें हमें नज़र आती हैं। लेकिन वेरी वेरी इंटरेस्टिंगली जो दूसरी बड़ी जो स्किल है वो इसेंशली दैट इज सॉफ्ट स्किल्स, जो शायद पहले उसको मतलब सॉफ्ट होने की वजह से या उसका नाम सॉफ्ट था, तो बहुत ज़्यादा उसको जो है वो लिफ्ट नहीं करवाई गई पास्ट में। लेकिन वेरी इंटरेस्टिंगली ये जो सॉफ्ट स्किल्स हैं ये बहुत जिसे कहते हैं ना कि बहुत फोर्स के साथ जो है इनकी नीड और इनकी जो कहना चाहिए कि जो इम्पोर्टेंस है वो सामने आई। सो इफ आई नाउ सम अप व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज कि दो जो हैं चीज़ें हमें देखनी चाहिए 2023 में जो हमें नजर आई। एक ये कि जो टेक्निकल स्किल्स हैं उसमें हम जो है अभी हम लेट्स से जो वर्क लाइफ बैलेंस है उसको भी डिस्कस करेंगे, और उसके अंदर जो है हम ये देखते हैं कि इसी कॉन्टेक्स्ट में जो हमारी ये स्किल्स हैं कि हमने अगर घर से काम करना है, फॉर एग्जांपल टू बैलेंस आवर लाइफ एंड टू while accepting the challenges of this new era, so then we have to have these skills which are IT related skills, which are technical skills, and alongside that we have to have the soft skills. So I think कि अब जो है शायद इस एरा में 2023 ऑनवर्ड्स 2024 में स्पेशली कोई वजह नहीं है कि हम ये कहें कि जी अभी हम सोच रहे हैं कि क्या स्किल्स होंगी और किस तरह से जो है हम नेविगेट करेंगे आवर जर्नी इनटू 2024. So these are few points, and if I mean we can of course further develop this discussion. श्योर खुर्रम, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? जैसे फराज साहब ने एक बहुत अहम बात कही कि इट्स नॉट ओनली 23-24, रादर वी हैव टू हैव आवर लाइफ इन फोकस, और चीज़ों को इसी तरह से एक होलिस्टिक पर्सपेक्टिव में देखने की जरूरत होती है। आप पर्सनल डेवलपमेंट को कैसे देखते हैं? एक्सेप्टिंग द न्यू नॉर्मल इज द मेन, जैसे डॉक्टर ज़ैर ने कहा कि कोविड के बाद चीजें चेंज हो गई और चेंज होती जा रही हैं। अभी भी कोविड चल रहा है, अभी रिसेंटली पता चला है कि नया वेरिएंट आया हुआ है। तो जिस तरह कुछ चीजें होती हैं जो बियॉन्ड कंट्रोल होती हैं, एक्सेप्टिंग द न्यू नॉर्मल इज द मेन की। हम लोग चीजें चेंज हो गई हैं, अप्रोच करना चीजों को, चाहे वो जॉब मार्केट हो, चाहे वो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हो, वो चीजें उसमें उनके डायनामिक्स चेंज हो गए। तो जितनी जल्दी आप चीजों को एक्सेप्ट कर लेते हैं और नई चीजों की तरफ जाना शुरू कर देते हैं कि अब यही नॉर्मल है, अब आप ये नहीं सोच सकते कि जी 2019 में तो ये होता था या 2018 में होता था, या जॉब हासिल करने की अप्रोच ये होती थी, एंटरप्रेन्योरशिप में एंटर होने की अप्रोच ये होती थी। अब आपने 2023 गुजार लिया। ये 2023 क्या है? एक स्टेप होता है लाइफ में, जो कहते हैं ना कि जिस तरह हम कुछ चीज़ों को सेलिब्रेट करने का मौका हमें हमेशा नहीं छोड़ना चाहिए, लिव इन टुडे, उसी तरह ये जो माइलस्टोन्स होते हैं ये आपको याद दिलाते हैं कि ये चीज़ें मूव हो रही हैं। तो इस वक्त जितनी चीज़ें मार्केट में हैं, जितनी चीज़ें नई नई स्किल्स हैं जो आपको अपने आप को ट्रेन करना है, अपने आप को चीज़ें अडेप्ट करनी है, मेरे ख्याल में जो नीड है, बाकी डिटेल में तो डॉक्टर ज़हर और फराज साहब बता चुके हैं, वो बहुत ज़रूरी है कि हम एक्सेप्ट कर लें इस चीज़ को मेंटली कि अब हमने क्या करना है। और अब जो चीज़ें चल रही हैं, जैसे अभी चैट जीपीटी की बात की, एआई की बात की, अब चीज़ें ऐसे ही होनी है। चीज़ें बहुत ज़्यादा असिस्टेंस आ गई है चीज़ों में, और नया जो जो भी कुछ आने वाला वक्त है 2024, वो इन्हीं चीज़ों के ऊपर बेस करेगा। तो एक तो हमें रेडी रहना चाहिए कुछ भी, किसी भी चैलेंज के लिए। दूसरी बात ये कि जो न्यू स्किल्स की रिक्वायरमेंट है, हम अब भूल जाना चाहिए या एटलीस्ट एक साइड पर पार्क कर दें। जो पहले नॉर्म्स थे, अब नॉर्म्स चेंज हो गए हैं। तो 2023 का सबसे इंपॉर्टेंट जो मैसेज है वो है कि जी आप जितनी चीज़ें नई स्किल्स आ रही हैं, नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं, आप उनको एब्जॉर्ब करें और अपनी लाइफ का हिस्सा बनाएं, और उस रेडीनेस के साथ 2024 में जाएं ताकि आपको आसानी हो चीज़ों में नेविगेट करने की। राइट। अच्छा, फराज भाई, आपसे मैंने एक और क्वेश्चन करना है, देन आई विल गो टू डॉक्टर ज़ैर साहब। इस वक्त जो हम लिटरेचर रिव्यू करते हैं या ऑनलाइन चीज़ों को देख रहे हो ना, कि बहुत सारी चीज़ें हमें नज़र आती हैं कि व्हेन वी वांट टू रिव्यू आवर 23, कुछ कहते हैं फाइनेंशियल से शुरू करो, कुछ कहते हैं नहीं अचीवमेंट से शुरू करो, किसी का ख्याल है नहीं हेल्थ इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, somebody say no, family is the number one in your priorities. What is your experience and observation? You have a background in psychology as well. तो cultural norms को देखते हुए where to start? Where to start? What is the point we should start with planning, reviewing or planning? दोनों बात। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अर्शद साहब, एंड आई थिंक ये जो क्वेश्चन है ये शायद 24 के हवाले से तो बहुत ही ज़्यादा रेलेवेंट हो गया। लेकिन मेरा अपना इस पे बड़ा ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट है
वो ये है कि Okay. जो इस लिस्ट में जो आपने बताई ना कि जी पहले फोकस किस पे करें, फाइनेंशियल पे करें, फैमिली पे करें, सोशल जी पे जी करें। मेरा ये ख्याल है कि अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब मैं ये नहीं कहता सब इससे एग्री करें, वो ये है कि सेल्फ इज द सेंट्रल थीम। बिकॉज अगर आपने 2024 में भी अपने सेल्फ को जो है प्रायोरिटाइज ना किया, तो सही may it be financial, may it be social, may it be anything, you will still remain in maybe in previous century. Because going forward, the most important thing which we can focus is self. And when I say self, what I mean to emphasize is our definition of self. कि हम सेल्फ को डिफाइन कैसे करते हैं, एंड उसका एक फंडामेंटल पिलर जो है वो है पर्पस। सो पर्पस बेसिकली जो है वो डिफाइन करता है कि हाउ डू यू डिफरेंशिएट योर सेल्फ फ्रॉम द अदर क्रीचर्स ऑन प्लैनेट अर्थ। बिकॉज Okay. अगर हमने अपने सेल्फ को डिफाइन ना किया अभी भी, तो 2024 में भी हम उतने ही ज्यादा प्रिमिटिव होंगे, इररेलेवेंट होंगे जितने शायद हम पिछली सदी में थे बहसीत इंसान के। And I think starting from self, then the second, like I said, is within the self is purpose and your belief system. May it be whatever, but then there has to be some sort of faith and confidence in whatever you have understood about yourself. And जो मेरा ख्याल है कि जो सॉफ्ट स्किल्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया पिछली 2 दहाइयों में सामने आया है वो सेल्फ अवेयरनेस है, जिसमें इमोशनल सही इंटेलिजेंस के हवाले से भी, ग्रोथ माइंडसेट के हवाले से भी इस पर बहुत एम्फसाइज किया गया है। मेरा अपना तजर्बा ये है कि जो मैं मुख्तलिफ कोचिंग सेशंस करता हूँ, काउंसलिंग सेशंस करता हूँ, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के डोमेन में भी, that there is a lot more which needs to be done on on the education of self. Because people have degrees, people have come from good institutes, but what I view even in at personal individual level as well as at organizational level, their understanding of the self is primitive, or I would say, if at all, it's actually not suitable for the 2024. Let me put it very very blatantly. Why? Because what happens is that when you have access to knowledge, जैसे डॉक्टर उजैर ने कहा कि जी now it is not about degree, it is about skills, and it is so true. Because if somebody has a degree in an MBA, when you interact with these people and you figure out that they're actually their concept of self and their let's say their interaction with themselves and others is not fully developed, what happens is that then neither they are suitable to conduct their personal life as well as social life and organizational life. तो मैं ये समझता हूँ कि 2024 में अगर हमें किसी चीज़ पे फोकस करना चाहिए, दैट इज टू एजुकेट आवर सेल्व्स अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ एंड अबाउट उसको ऑपरेशनली डिफाइन करने के साथ साथ we should also build awareness that from which original sources we can actually build our understanding about the self. And my last comment would be, there is all the more requirement to refer to the original text, the likes of maybe the works of Ibn al-Arabi, Imam Ghazali, and then of course Rumi, Maulana Jalaluddin Rumi, and Allama Muhammad Iqbal. So these are the people who have talked, substantially on the concept of self. And very interestingly, जब आप देखते हैं मॉडर्न एनवायरनमेंट में, तो आपको बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो जिसे कहते हैं ना कि जो दोबारा इसको एक फ्रेश पर्सपेक्टिव से जो है इसी चीज को वो प्रेजेंट कर रहे हैं। सो इसका मतलब मैं ये इसको जैसे जिसे कहते हैं ना, मैं रिड्यूस ये करूंगा कि 2024 एंड बियॉन्ड में जो सेल्फ अवेयरनेस है और जो सेल्फ की जो आगही है जिसे हम कहते हैं या खुद ही कहते हैं, इसकी जो इसके बगैर आप सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। इफ आई मे पुट इट वेरी वेरी सिंपली, बिकॉज अगर आपने ये समझ लिया कि जी अब आपका जो है आप टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट है एंड हेंस दैट मीन्स दैट यू विल सर्वाइव थ्रू, सो आई एम अफ्रेड यू विल नॉट। व्हाई? बिकॉज देयर इज अदर चैलेंज जो आपके टॉपिक में भी आपने हाईलाइट किया था, दैट इज द वर्क लाइफ बैलेंस एंड वेल-बीइंग or mental health, mental wellness. Now the problem is for good or bad reasons, but COVID has brought mental health and personal individual well-being on the forefront. And probably as a psychologist, I remember there were times when I used to feel embarrassed telling somebody कि यार I'm a psychologist. Back in maybe mid-90s, किसी को आप भी बताते थे ना कि यार मैंने psychology पढ़ी है, तो वो आपसे कहता था कि यार शायद पता नहीं क्या मतलब what is wrong. But now I think now I see there's a major change in the attitude of people.
in organizations as well as in overall our social fabric, that people approach the topic of well-being, wellness more seriously. And सही how do we maintain our work-life balance in that context is also very essential. So these are ठीक my जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने एक अहम पॉइंट हमें ये बताया है कि सेल्फ, हु आई एम, फॉर व्हाट पर्पज आई एम इन दिस वर्ल्ड, और आपके जो स्ट्रॉन्ग रेफरेंसेस दिए हैं फ्रेंकली वो तो बहुत ही ऐसे हैं, स्पिरिचुअल हैं, जिसमें कोई इलाका, मजहब या आपकी दूसरी आइडेंटिटी नहीं आती, बट ह्यूमैनिटी, लव और रिस्पेक्ट जो है वो सबसे पहले आती है। तो इस पे वी विल कम बैक टू दिस, बट लेट मी आस्क डॉक्टर साहब कि डॉक्टर साहब, क्या एक स्टार्टिंग पॉइंट ये भी हो सकता है कि वी शुड नो, इसी बात को थोड़ा सा सेल्फ वाली बात को हम कम अपने प्रोफेशनल वे में अगर देख रहे हों कि एज ए मैं जो भी हूँ, मैं अकाउंटेंट हूँ, मैं सेल्स में हूँ, मैं मैनेजमेंट में हूँ, एचआर में हूँ, डॉक्टर हूँ, तो वेयर डू आई स्टैंड एज अ प्रोफेशनल? इस पे हम अपना कर सकते हैं एनालिसिस फॉर अ बेटर प्लान 24। Thank you, Akif, and thank you for enlightening about the mental health. Yes, I fully endorse your idea that the mental health is one of the key component, particularly the social isolation during COVID time. But coming back to Akif's point, Akif, let's be very frank and honest. Now, everybody is competing with the any other, what we call it, the citizen or the person in the globe, which mean all of us, we are competing with 8 billion people every day. If we are missing even a single day, we are missing an opportunity. And coming to, as a financial person, as an accountant, or ABCD, whatever it could be, I have seen the people who landed like flock of Indian people who are landing in Toronto. They may be having some different degree, but then they plan. I know so many management people, so many accountants, they change their basic skill set. I mean, they were entering in a massive way in the data science, the blockchain, and whatnot, really. And look at the statistic. What do the statistic tell? In 2022, over 90% of organizations reported plans to invest in new technologies, creating an estimated 12 million tech-related jobs by the next year, 2024. And by 2024, it is projected that the automation will displace 85 million jobs and create 97 million new jobs, emphasizing the need for upskilling I mentioned. And the remote work trends in 2021, 53% of employees reported plans to offer remote work option permanently, impacting job location preferences. So the green economy is going to create 20 million jobs. And as I mentioned earlier, the aging workforce, big opportunities they are being created, and the service sector, which is the healthcare. For example, let me share with you, if you are a medical doctor, it's very hard for you to find a place in international developed countries. But if you have any experience, knowledge like allied healthcare people, you can get the permanent residence sitting in your home, which means rethinking, strategic thinking, reskilling, adding more skills, opportunities going to the most prepared person, not to the most qualified person. Remember this thing. So if we are prepared well and we know what's going on, I think we can plan very well. So I have mentioned all the technologies, I have mentioned the opportunities and competition with 8 billion people with the global economy. Like you can invade into like it's close to 26 trillion US dollar economy in North America, even sitting in Pakistan, Pindi Kheb, Chicho Ki Maliya and Sahiwal. Now there is no barrier. I think it was never so easy as it is today to change your profession. Take my own example. You know that, you know me very well.
So I had so many options. So I changed like 5 careers. I started my career as a fighter pilot. I was trained in medicine. I entered into business, biotechnology, and whatnot, really. So this is my like fifth or sixth career, and the interest areas. So if it's a bad thing to share your own example, but I'm sharing how much are the opportunities, how much should be the adaptability and flexibility, that if you are good, you can find a place anywhere in the world. So there's a big opportunity for everybody, Right. whether accountant, financial, or anyone. सो यू आर सेइंग कि भाई एक बुरी खबर है कि ट्रेडिशनल जॉब जो मिलियंस में वो खत्म हो जाएंगे, एंड द गुड पार्ट ऑफ दिस न्यूज इज कि देयर आर न्यू जॉब्स एज वेल. एंड सेकेंडली, डू नॉट think locally. Now you can plan globally. Opportunities are all around if you are well aware and you can choose the right technology. There is a future for you. Thank you. अच्छा खुरम साहब, ये एक समीला साहब का भी क्वेश्चन है और मैं भी इस तरफ जाना चाह रहा था कि टेक्नोलॉजी इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन कंडक्ट, पर्टिकुलरली इफ इट लीड्स टू लेजीनेस. प्लीज कमेंट. आप टेक्नोलॉजी में, जैसे डॉक्टर साहब ने हमें ग्लोबल पर्सपेक्टिव दिया, फराज साहब ने हमें एक बहुत ही पर्सनल लेकिन जो हमारे एक विजडम बेस्ड, फोक विजडम बेस्ड कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनैलिटी है, उस पर हमें लेके आए कि आप उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते. वेयर डू यू सी द बैलेंस? देखें, अभी डॉक्टर साहब ने बात की कि टेक्नोलॉजी और न्यू जो है ग्रीन इकोनॉमी, आपके 97 मिलियन जॉब्स अगर जनरेट कर रहे हैं ना, तो 85 मिलियन डिलीट भी हो रही है. तो ठीक है. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि, और इसीलिए बात हो रही है कि पहले क्या था कि हमने डिग्री ले ली, हमें एक सेट स्किल सेट था, एटलीस्ट 20-25 साल हमारी कोशिश होती थी कि उसी पे गुजारें. 25 साल 30 साल की सर्विस पे लोग रिटायर हो जाते थे. अब वो दौर खत्म हो गया है. बार बार मैं ख्याल है दोनों स्पीकर्स ने भी कहा, कमेंट्स में भी आ रहा है कि आपको अपनी सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर काम करना है, चाहे आपको प्रोफेशन चेंज करना पड़े. क्यों? आप नहीं होंगे, आपकी जगह कोई और होगा. तो जहां पे अगर लेजीनेस तो जरूर आती है, बट आप नहीं होंगे वहां पे. ह्यूमन लेजीनेस राइट. जहां पे होगी, और जो लेजी होगा ना, उसको वो एक्सट्रैक्ट आउट हो जाएगा, किक आउट हो जाएगा. क्यों? ऑब्सोलीट अगर हो जाएगा वहीं पर. ऑब्सोलीट हो जाएगा. टेक्नोलॉजी हमें हासिल करनी है, चाहे आपको, देखिए, एक इंसान की अपनी स्किल्स होती हैं. सॉफ्ट स्किल्स की हम बार बार बात करें, ये हमेशा एक बात करते हैं कि अपनी इनर स्किल्स को एक्सप्लोर करें. डिग्री आपने की, डॉक्टर साहब है हमारे सामने एग्जांपल है, इज अ मेडिसिन डॉक्टर, बट इज लाइक हिज एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स, उनकी सेल्स मार्केटिंग स्किल्स बड़ी स्ट्रांग है. इसी तरह एक इनर स्किल्स होती हैं. हम डिग्री जारी बात एक ही लेते हैं, दो ले लेते हैं मैक्सिमम, से ज्यादा तो नहीं कर सकते, बट अब आपके अंदर की स्किल्स होती हैं जो आप अचीव कर सकते हैं, और जो चीजें अवेलेबल होती हैं उनके जरिए आप चीजों को कैप्चर कर सकते हैं. इकोनॉमी, दुनिया, न्यू टेक्नोलॉजीज डेली बेसिस पे चेंज हो रही हैं. बैरियर्स खत्म हो रहे हैं, एक तरफ जॉब्स खत्म हो रही है, तो एक तरफ बहुत अपॉर्चुनिटीज बढ़ भी रही हैं. इंटरनेट के बाद और इंटरनेट आफ्टर कोविड, जब लोगों को ऑनलाइन काम करने का मौका मिला और रिमोट काम करने का मौका मिला, तो बैरियर्स खत्म हो गए. लोग दुनिया में बैठ के कहीं से कहीं काम कर लेते हैं. बड़े बड़ी कंपनीज के CHRO, हालांकि जो इज ह्यूमन जॉब, ह्यूमन डीलिंग वाली जॉब है, लोग वर्क फ्रॉम होम भी कर रहे हैं. आई मीन, पिछले दिनों हमारे एक स्पीकर भी थे, इज अ CHRO फॉर बिग मल्टीनेशनल, और वो वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे. तो चीजें डायनामिक्स चेंज हो गए. तो यस, टेक्नोलॉजी आई है, टेक्नोलॉजी जो है वो इलिमिनेट जरूर करते हैं, बट उस टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करने के लिए मजीद जॉब्स भी क्रिएट हो रही हैं, जो वी हैव टू. अगर हम लेजी हो जाएंगे, आपको लगेगा, तो यस, आपकी जॉब खत्म हो जाएगी, बट यू हैव टू बी रेडी. आप अपनी उन स्किल्स पे काम करें जो गॉड गिवन है, और जो आप सीख सकते हैं, और जिनकी रिक्वायरमेंट है, ताकि आप अपनी जगह बनाएं और फर्दर प्रोग्रेस करें. क्यों? अपॉर्चुनिटीज हैं, बैरियर्स हट गए हैं. आप यहाँ बैठे बैठे रशिया में जॉब ले सकते हैं, यूरोप में ले सकते हैं, मिडिल ईस्ट इसमें ले सकते हैं. आपको ट्रैवल करने की जरूरत नहीं पड़ती. इसी तरह उन तमाम टेक्नोलॉजी को चलाने के लिए वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने रेडी और कितने क्विक डिसीजन लेते हैं आप. चीजें आ रही हैं, चीजें जा रही हैं, और बहुत तेज हो गया जमाना. जो अपनी स्किल्स को एक्सप्लोर कर रहा है और जो उन चीजों को अचीव कर रहा है, वो अपने लिए कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी क्लोज कर रहा है. तो यहाँ जब भी अपॉर्चुनिटी आपके लिए अवेलेबल होती है, किसी की अपॉर्चुनिटी खत्म भी हो रही होती है, बट जनरेट भी हो रही है, तो ये आपके ऊपर है. अब वो अप्रोच नहीं हम कर सकते कि जी चीजें हैं, चल जाएंगी, वो खत्म होगी कहानी. अब वो चीज खत्म हो गई. अब लोग स्किल्स के ऊपर बात करते हैं. भी ताहिर हुसैन साहब ने कहा था कि कितने रिक्रूटर्स हैं जिन्होंने अपना GPA लेवल को रिड्यूस कर दिया है, उनकी रिक्वायरमेंट रिड्यूस हो गई है. अब वो नहीं मांगते 3.6 अबव. अब वो डिफरेंट हो गया. क्यों? दे नीड स्किल्स, उनको काम करना है, उनको सर ऐसे लोग चाहिए जो उनके लिए सर काम करें. सर ये यस. चैट एक, we have नहीं some होगा. disturbance today.
क्या मैं करता हूँ। म्यूट हो गया, प्लीज यू कैन कंटिन्यू। ओके जी। तो इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई हम तुम्हें रेडी क्या रहें। करेगा और उससे? जस्ट मोमेंट, आई हैव टू रिमूव। हाँ, इनको रिमूव ना करें, साइलेंट कर दें। साइलेंट होते हैं वो फिर ऑन कर देते हैं, इसलिए कि दे आर नॉट अच्छा। ट्रू एनी। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम रेडी रहें उन स्किल्स को हासिल करने के लिए और अपने आप को अडेप्ट करने के लिए कि जो करना है हमें। अब ट्रेडिशनल तरीके से चीजें नहीं चल सकती बेहतर, जैसे खासतौर पे फराज साहब ने कहा ना, सेल्फ के ऊपर काम करना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। कोई और नहीं, किसी और का इंतजार मत करें, बहुत कम्पिटिटिव हो गया है, चीजें बहुत कम्पिटिटिव हो गई, चाहे मेडिकल साइंस ले लें, फाइनेंस पर्सन, चीजें इतनी चेंज हो गई हैं, आपकी चीजों को रिप्लेस होते जा रहे हैं। मगर ऐसा नहीं है कि अपॉर्चुनिटीज खत्म हो गई, उस टेक्नोलॉजी वाली चीजों को चलाने के लिए भी लोग चाहिए ना, आबादी तो बढ़ रही है, चीजें तो है। तो या आपके ऊपर है कि आप अपने आप को कितनी जल्दी जो है वो रेडी करते हैं इस चीज को कि आपने आगे निकल जाना है। आप बैठे रहेंगे, खत्म होते रहेंगे, लेजी होंगे, ग्रेजुअली आप डिप्रेशन में चले जाएंगे। तो इस वक्त हरकत में बरकत वाली बात जरूरी है कि आप जल्द से जल्द चीजों को देखें। और सबसे इंपॉर्टेंट हो क्या रहा है हमारे आसपास, 2023 खत्म हो गया, दिसंबर आ गया, बड़ी तेज, बहुत तेज ये साल गुजरा। अगर आप देखें तो 2023 का तो पता ही नहीं चला। 2024 आने वाला है, जो गुजर गया वो तो कोई बात नहीं, बट जो आने वाला है उसके लिए आप रेडी होने चाहिए। क्या क्या होने जा रहा है, बहुत चेंजेस हैं आपको। पिछले दिनों अखबार की रिक्वायरमेंट थी मेरे घर पे। क्यों जो रिक्वायरमेंट थी, शीशे साफ करने के लिए। तो देन वी रियलाइज कि अखबार तो अब पढ़ता है कोई नहीं है, अखबार में अब हॉकर भी नहीं आते, बड़े कम लोग हो गए हैं जब हॉकर्स ही नहीं आते। अब आपको हॉकर नहीं मिलता अखबार डालने के लिए, सिर्फ एक प्रिंट मीडिया चल रहा है, बाकी हर चीज डिजिटलाइज हो गई है। ये छोटी सी एग्जांपल है चेंज की, कि चीजें चेंज हो गई। अगर आपके पास, आपको नई फाइल खोलनी आती, आपको नई चीजों को, सॉफ्टवेयर को पढ़ना आता, आपको नई एप्स आते, आप पीछे रह जाएंगे। इन्हीं में आपके राइट। लिए अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं, चाहे एंटरप्रेन्योरशिप हो चाहे जॉब हो। तो बहुत तो जरूरी आप है ये कि कह हम। रहे हैं कि जहाँ अपॉर्चुनिटीज कम हो रही हैं, कुछ नई अपॉर्चुनिटीज भी आ रही हैं, इट इज अप टू द इंडिविजुअल कि वो कितना विजिलेंट है, और वो अपने कितना बाखबर है, और कितना अपनी एबिलिटी टू परफॉर्म, कितना रेडी है, सबसे इंपॉर्टेंट है कितना कितना रेडी। रेडी है उस चीज को अडॉप्ट करने के लिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बहुत अच्छा पैगाम आपने मुझे दिया है। अच्छा, फराज असलम साहब, ये आयशा साहिबा का भी क्वेश्चन है, और मैं उसको थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। उन्होंने तो कहा है जी, क्या मेंटोरी जब ना हो तो क्या करें? तो लेकिन खास तौर पर व्हेन वी रेफर टू द सेल्फ, तो क्या मेंटोर का होना जरूरी है, या मैं खुद पढ़ के या अपने ऊपर गौर करके अपने आप को ड्राफ्ट भी कर सकता हूँ, इम्प्रूव भी कर सकता हूँ? अर्शद साहब, आई थिंक सबसे पहले तो मैं वही वाली बात में दोबारा दोहराऊंगा कि मेंटोर जो है ना, वो तो बाद में आता है। पहले तो ठीक है। सेल्फ आता है ना, आपका खुद। अगर आप अपने सही है। बारे में जो है वो आप ही कहते हैं कि जी मेंटोर ही सारा कुछ कर देगा मेरे लिए, तो एक हम्म। ये भी माइंड सेट है ना, क्योंकि सम हाँ, पीपल हम आर लुकिंग तवीज से फॉर। काम चलाने वाले लोग हैं, फूक हाँ से, जी। दुआ से। तो आई थिंक माइंड सेट जो है ना, उसमें साइकोलॉजी का एक असूल है। वो ये है कि you cannot make somebody learn until unless somebody wants to learn. Secondly, you are not the only, as a psychologist or as a counseling psychologist, you are not the only one to provide that counseling. अच्छा, अब इसके अंदर जो कुछ रवैये हमें देखने में आते हैं, वो ये है कि तशद्दुद आमेज रवैये हैं, शिद्दत पसंद सही। रवैये हैं। वो ये है कि लोग जो हैं वो नॉर्मली ये तमाम प्रैक्टिसेस जो काउंसलिंग से रिलेटेड हो या कोचिंग से रिलेटेड हो, उसमें हमें देखने में मिलता है कि समटाइम्स देयर इज नॉट एक्चुअली अ जेन्युइन डिजायर टू लर्न, देयर इज सम अदर अल्टीरियर मोटिव। अब जब आपके मोटिव जो हैं वो आपने खुद से अपने गोल सेटिंग नहीं की, क्योंकि आज आज मेरा हमारा एक टॉपिक ये भी है कि गोल सेटिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। जी जी। हमने जब मेंटोर जो है उसको चूज करना है, तो आइदर वेदर द मेंटोर इज अलाइंड विज़ावी आवर गोल्स। फॉर एग्जांपल ये कि जी मैं अपनी जो है वो लेट्स से टेनिस बेहतर करना चाहता हूँ, ठीक है। अब मैं कोच हायर कर लेता हूँ बैडमिंटन का, तो मतलब कहने का ये है कि कोच तो वो है, बट ये है कि शायद उसकी जो वो फील्ड है वो प्रॉब्ली सूटेबल वो नहीं, डिफरेंट है। वो डिफरेंट है। सो आई थिंक स्टार्ट जो होता है ना जी कोचिंग का या काउंसलिंग का प्रोसेस, वो इसेंशली बड़ी खूबसूरत बात है कि वो उस अपनी ज़ात से ही स्टार्ट होता है। और इस अपनी ज़ात की आगाही के लिए, उसकी उसकी अवेयरनेस के लिए, यू कैन नॉट गो टू अ मेंटोर और अ कोच और अ लेट्स से ट्रेनर कि जी मुझे मुझे पहले आप बताएं कि मतलब हु एम आई या व्हाट इज माई सेल्फ। तो इसेंशली कहने का मकसद है कि इतना तो होमवर्क आपका होना चाहिए कि आप अपने आप को इतना सा समझें। और मैं समझता हूँ कि मुझे आई वुड लाइक टू स्पेशली एम्फसाइज कि कुरान हकीम में इसके ऊपर बहुत एम्फोसिस है।
और वो इस तरह सही। से है कि आप मसलन एक आयत जो है सूरतुल कमर की है कि वलकद यस्सरनल कुरान लिज़िक्र फहल में मुदक्किर, we have made the understanding of Quran easier. Is there somebody who understands? So basically जो अल्लाह ताला ने जितने इंसानों को तख्लीक किया है उस उनमें एक इनहेरेंट ये वाली सेंस जो है सब में है। और उसमें फिर दूसरा एक और मैं इसमें हाईलाइट करूंगा वो ये कि कि ये जो हमने बात की ना कि जी मेंटोरिंग एंड कोचिंग ये सेकंड स्टेज है। पहली स्टेज है कि एज अ इंडिविजुअल एज अ ह्यूमन बीइंग it is our primary responsibility to understand our own selves even before when we go out and seek a mentor or a coach. Hence इसका जो ताल्लुक है अब आपके सवाल की तरफ मैं वापस आऊंगा कि फिर हाउ डू वी फाइंड कि ये कैसे पता लगेगा कि हम अपनी सेल्फ अवेयरनेस को या अपनी सेल्फ को जो है वो कहाँ से पता चलेगा उसका। तो उसके हवाले से मैं ये कहूंगा कि अगेन आई विल कोट अ वर्स फ्रॉम होली कुरान सूरतुल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आयत नंबर 24 है। उसमें है कि अफला यतदब्बरूनल कुरान, अफला यतदब्बरूनल कुरान अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा, why and why don't you ponder, अफला यतदब्बरूनल कुरान, why don't you ponder on Quran, अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा, क्या तुम्हारे दिलों पर ताले पड़े हुए हैं। So to all the audience, I would invite everyone to ponder on it कि देखें जो दिल है ना हमारा उसके ऊपर अगर ताला पड़ा हुआ हो तो नो मेंटोर कैन एक्चुअली और नो कोच कैन गाइड यू। सो टू बिगिन विद यू हैव टू start the journey of your self exploration, and only then you should seek a relevant coach or a guide. So this is how I will address this question. I'm sure probably this has sufficed. Of course. So the starting point is yourself. Starting point is your inner, and you can seek guidance from Holy Book, Quran as well. और वहाँ से आपको मिलता है। तो डॉक्टर साहब ये नताशा सेठी सवाल कर रही हैं कि डिग्री और स्किल की जो आपने बात शुरू की थी उस पर थोड़ा सा आगे बढ़ाएं कि हाउ वी कैन मोर फोकस ऑन स्किल ताकि जॉब को इंश्योर किया जाए। क्योंकि देखिए ये तो एक बेसिक नीड है। हम जो गुफ्तगू जो जैसी करें, ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट की बात कर लें, स्पिरिचुअलिटी की बात करें, बट द मोर इम्पॉर्टेंट है कि लोगों का डे टू डे चलाने के लिए दे नीड जॉब। इस पे आप थोड़ी सी और रोशनी डालेंगे क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत कम है। Sure. पहले तो मैं सेग्रीगेट कर दूं। अगर हम पाकिस्तान की बात करें जो कि मोस्टली हमारे व्यूअर और ऑडियंस जो है वो पाकिस्तान से हैं, इट इज़ डिफरेंट ओवर हियर। लेकिन सडनली वी आर शॉक्ड व्हेन वी एंटर द ग्लोबल वर्क पूल, उसमें जब दाखिल होते हैं, चूँकि यहाँ पे द यूनिवर्सिटीज़ आर वेरी गुड इन मार्केटिंग ओनली द डिग्रीज, राइट। तो मैं जैसा कि बता रहा था कि जो इमिग्रेंट जाते हैं यहाँ से, वी हैव ए गुड एग्जांपल, ट्रांजिशन करते हैं तो देन वी नीड टू रीस्किल देम जनरली ओवर देयर। वो जाके पूछते हैं उनसे कि भाई आप, इजी एग्जांपल है कि इफ आई ऑफर यू दिस जॉब, कैन यू स्टार्ट राइट टुमारो। हैविंग ए डिग्री which mean it's very difficult really to perform the job. तो the basic difference skills को मैं इसलिए ज़्यादा emphasize कर रहा हूँ कि जिस इंस्टीट्यूशन में मैं फैकल्टी भी हूँ वहाँ हमारे पास दर्जनों क्या सैकड़ों लोग आते हैं, इंजीनियर्स आते हैं, डॉक्टर्स आते हैं, बिजनेस के लोग आते हैं, फाइनेंस के लोग आते हैं। हम उन्हें रीस्किल करते हैं टू मोर फोकस एंड सूटेबल टू द वर्क इन्वायरमेंट। रीज़न बीइंग बिकॉज, अच्छा बहुत सारी और चीज़ें यहाँ पे जो कॉमन कंप्लेंट है, वहाँ पे जब जाते हैं तो लोगों से मुलाकात होती है, वो कहते हैं जी मैं 6 महीने हो गए, 8 महीने हो गए हैं, रेज्यूमे भेज रहा हूँ, मुझे कभी इंटरव्यू की कॉल नहीं आई। अच्छा, अब अगेन ये देखें, ये एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है। यहाँ पे आप होप करते हैं कि आपका रेज्यूमे किसी की नज़र से गुजरेगा। इट इज़ टोटली सॉफ्टवेयर ड्रिवन। जो वहाँ पे रेज्यूमे आपका कभी भी ह्यूमन टच नहीं होगा। और ऑन एन एवरेज, फराज जानते होंगे, दे स्पेंड लाइक 7 सेकेंड्स ऑन वन रेज्यूमे। और जो सॉफ्टवेयर को आपने फिल्टर लगाया वो इंटरव्यू के लिए उसी को सिलेक्ट करेगा जो उस पर पूरा उतरता है। तो बहुत सारी चीज़ों के लिए हमें गौर ये करना है, वी फोकस ऑन एम्प्लॉयमेंट, वी नीड टू रीफोकस ऑन एम्प्लॉयबिलिटी, दैट्स अ डिफरेंस। हम अपनी जो आज की जॉब है उसको फोकस करते हैं कि ये कायम रहे, दैट इज इम्पॉर्टेंट।
बट एम्प्लॉयबिलिटी इज वेयर डू यू सी योर सेल्फ। कोई भी कंपनी कोलैप्स हो सकती है, जॉब खत्म हो सकती है, स्किल्स रिडेंडेंट हो सकते हैं, तो स्किल इन्वेंट्री आपको चेंज करनी है। तो हमारा इस लिहाज से एक्सपोजर बहुत ही ज़्यादा है, जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि डेली बेसिस के ऊपर वी मीट जी जी। डजन्स ऑफ पीपल। तो मैं ये कहूँगा कि स्किल फॉर मी, अगर आपके पास मल्टीटास्किंग स्किल्स है, एक नहीं चलेगा तो दूसरा चल जाएगा। और वैसे भी आजकल जो रिपोजिटरी बनाते हैं, स्किल रिपोजिटरी ऑर्गेनाइजेशन में, इवन इफ यू नो 2 or 3 फॉरेन लैंग्वेजेस, दैट इज अ स्ट्रॉन्ग प्लस। इफ यू नो स्पेनिश, हिंदी, मैंड्रीन, सो दैट्स अ स्ट्रॉन्ग प्लस। हालांकि ये बिल्कुल सॉफ्ट स्किल है, फराज इसको एग्री करेंगे कि आपके पास वो नहीं है, लेकिन वो इसको भी वैल्यू करते हैं। तो मैं एम्फोसाइज ये करूंगा कि अगर हम थोड़ा सा पैराडाइम रीस्ट्रक्चर कर लें, वी आर ऑल ग्लोबल प्रोडक्ट। किसी ने चैट बॉक्स में लिखा भी हुआ था कि पाकिस्तानी वी आर द बेस्ट। नो डाउट इंडिविजुअली वी आर, मैनी ऑफ अस आर द बेस्ट। लेकिन एक हमारा कल्चरल इशू है, वो है मेगैनोमेलिया, कि हम समझते हैं कि हम बहुत बड़े हैं और जनरली जाते हैं। बल्कि एक साहब का मैं इंटरव्यू कर रहा था टोरंटो में, तो उनसे सिंपल क्वेश्चन पूछा कि आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है, तो उन्होंने कहा जी मैं कुछ लेने नहीं, कुछ देने आया हूँ। आई मीन ही वॉज ट्राइंग टू बी टू मच बुकरात। तो मेरे कहने का मतलब ये कि पैराडाइम ही बहुत ज़्यादा वीक होता है। जब ट्रांसफॉर्मेशन होती है, क्रॉस कल्चरल ट्रांजिशंस होती है, तो वो कभी इसको एक्सेप्ट नहीं करते। तो दैट्स माय व्यू पॉइंट, कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें अगर आपको आती हों और आप बताएं, एंड सम हाउ और अदर यू मैनेज टू एंटर इनटू एन इंटरव्यू एंड शो योर पोर्टफोलियो, डेफिनेटली यू कैन फाइंड अ प्लेस। और आजकल मैं ये कहता हूँ कि जिस बंदे के हाथ पांव चलते हैं, दिमाग थोड़ा सा भी काम करता है, ना वो भूखा मर सकता है, ना जॉब के बगैर रह सकता है, डेफिनेटली। राइट। सो वी नीड टू चेंज अवर पैराडाइम। अच्छा, अब मेरा लास्ट क्वेश्चन खुरम साहब से और फिर फराज साहब से भी यही क्वेश्चन है कि देखिए, अब हम सेल्फ की हमने बात की, हमने ग्लोबल पर्सपेक्टिव की भी बात की। अब इन चीज़ों के साथ साथ इसको ज़हन में रखते हुए ये रियलिटी है जिसे हम ग्राउंड रियलिटी कहते हैं कि मोस्ट ऑफ अस विल स्टे इन पाकिस्तान, मोस्ट ऑफ अस विल स्ट्रगल विद इन पाकिस्तान। एंड सिचुएशन इज कि हमारे पास कुछ इश्यूज हैं जिसमें कुछ फाइनेंशियल, कुछ के ज़्यादा इस वक्त हो चुके होंगे, कुछ ज़्यादा अखराजात की वजह से, क्योंकि प्राइस हाइक भी एक पिछले 1.5-2 साल के अंदर जो इकोनॉमिक क्रंच है वो पाकिस्तान में बढ़ा है, लोगों के पास स्ट्रेस लेवल भी बढ़ा है। सो प्लीज गाइड अस कि हम अपनी प्रायोरिटीज को कैसे सेट करें। कि मतलब मैं चाहता हूँ फाइनेंशियली भी इंप्रूव करूँ, मैं चाहता हूँ मेरी पर्सनल ग्रोथ भी हो जाए, मैं चाहता हूँ मेरे स्टेटस में भी इजाफा हो। तो कैसे मैं अपने आप को प्रायोरिटाइज कर सकता हूँ, को गोल सेटिंग कर सकता हूँ, को टाइम एलोकेशन अपने मुख्तलिफ चीज़ों को कर सकता हूँ, अपने डिसिप्लिन में कुछ बेहतरी ला सकता हूँ, ताकि हमारे जो सुनने वाले हैं वो आगे बढ़ सकें। फॉरम वी विल स्टार्ट विद यू। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है अपनी विजिबिलिटी बढ़ाना। जैसे अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि लोगों को शिकायत होती है जी, मैं 6 महीने से सीवी भेज रहा हूँ, रिज्यूमे भेज रहा हूँ, किसी ने रिप्लाई नहीं किया। अच्छा, जब राइट। रिज्यूमे बनाने की बारी आती है, एक रिज्यूमे होता है जो बना हुआ होता है। मतलब मैंने अभी 2 दिन पहले इंटरव्यू किया, उन्होंने अपनी लास्ट 2 जॉब्स मेंशन ही नहीं की थी, वो खातून थी, उन्होंने कहा जी मुझे टाइम नहीं मिला। मैं कहा, जी आपने जो लास्ट जॉब इसमें मेंशन की है वो 2022 की शुरू की है, उसके बाद 2 जॉब्स आपने की एंड आपको टाइम नहीं मिला, फिर आप क्या करने आई हैं यहाँ पे? एनीवे, तो पॉइंट ये है कि रिज्यूमे तो हो गया, ये सारी चीजें सॉफ्ट स्किल में अपनी विजिबिलिटी बढ़ाएं। पाकिस्तान में बैठ के यहाँ पे हमारी टीचर्स हैं, होम होम मेकर्स हैं, खवातीन हैं, बच्चियां हैं जो पूरी दुनिया में ट्यूशन पढ़ा रही हैं। पाकिस्तान में ऐसे। बैठ के कारी साहब जो हम्म। हैं वो दुनिया भर के बच्चों को किरात पढ़ा रहे हैं। क्यों? उन्होंने अपनी विजिबिलिटी बढ़ाई है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है, जो फिर वही बात है गुड फराज पॉइंट। साहब वाली बात, कि अपनी सेल्फ के ऊपर काम करना बड़ा जरूरी है। अपने आप को विजिबल करना आपका काम है। आपको कोई ढूंढते ढूंढते नहीं आएगा, चिराग लेके ढूंढता हुआ नहीं आया आपके आपके पास। अगर आप में कोई चीज है, पहले उसको एक्सप्लोर करें और उसको विजिबल करें, अपनी प्रेजेंस बढ़ाएं। अगर आपने वो उन अपॉर्चुनिटीज को अवेल करना है जो पाकिस्तान से बाहर है। देखिए, ये फैक्ट है कि पाकिस्तान में इकोनॉमिक हालात खराब चल रहे हैं, हमें भी पता है। पाकिस्तान में हाँ। आबादी बढ़ रही है, अपॉर्चुनिटीज कम है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स कम हो गई हैं बेताशा, हमें पता है। बट उसके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है कि आप फॉरेन मार्केट को टच करें अपनी रेंज में रह के। और एक बात याद रखिएगा, हमारा लास्ट जो अपने बल पे का वेबिनार था इस मामले में, बड़ा ओपनिंग था कि ग्रेजुअली चीजें बिल्ड होती हैं। आपको आते ही $5,000 की ऑनलाइन जॉब नहीं मिल जाती। पचास हम्म। पचास डॉलर से आपके असाइनमेंट स्टार्ट होते हैं।
आप काम करते हैं, आपको उस पर $50 मिलते हैं, आपको $35 मिलते हैं, आप स्ट्रैटेजिक फेसबुक स्ट्रैटेजिक एजेंट बनते हैं, आपको थोड़ी थोड़ी अमाउंट्स मिलके बनती है। अपनी विजिबिलिटी बढ़ाएं, अपनी एक्सपेक्टेशन को सेट करें, रियलिटी चेक रखें। अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं और आप उस मार्केट को टच करना है जो पाकिस्तान से बाहर है और ओपन है। वहां पे ऐसा कुछ जगह होगा बाइस, बट अभी भी लोग जो काम करता है उसको अगर और जो उस तरीके से ईमानदारी से काम करता है उसको काम देते हैं। ब्लैकलिस्ट जब भी आप होते हैं जब कोई ना कोई गड़बड़ होती है। अदरवाइज तो आप अपनी विजिबिलिटी बढ़ाएं, अगर जो आपको काम है अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस बढ़ाएं, अप्रोच करें। ये मत सोचें बैठे बैठे आपको कोई अप्रोच करेगा, इतना बड़ा बनने की जरूरत नहीं है। जैसे अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि वो इंटरव्यू में इतना मास्टर बन रहे थे कि मैं देने आया हूँ, नहीं, आपने डिलीवर करना है। आपने डिलीवर करना है और ये टू वे अप्रोच होती है। कोई काम आपको दे रहा है, पैसे दे रहा है, आपने डिलीवर करना है। इट्स अ जॉइंट थिंग, दोनों के दरमियान हो जाता है। तो अपनी प्रेजेंस बढ़ाएं उन चीजों को, और अपने आप को अपनी 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 विजिबिलिटी बढ़ाएं, अपने आप को मार्केट करें। जैसे रिज्यूमे के बारे में हम कहते थे ना कि वो आपका कवर पेज है यार, तो वही चीज आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस होती है। लिंक्डइन का प्रोफाइल हो गया, जिन जिन फोरम से जाते हैं, फाइवर है और बेताफर्क है और बेताशा है, वहां आपके आपके विजिबिलिटी बड़ी वाज़ेह होनी चाहिए कि आप क्या कैपेबल है, किस चीज के आपने क्या डिलीवर किया है। और अपनी एक्सपेक्टेशन दुरुस्त रख के अपने आप को मार्केट करें। अपॉर्चुनिटीज बेताश हैं जो मिल भी रही हैं, और लोग माशाल्लाह बहुत अच्छा अर्न भी कर रहे हैं बैठे बिल्कुल हुए, सही। कोई भी सो छोटा सो सा गाँव हो चाहे गाँव। हाँ, अब जी, हमें ग्लोबली सोचना होगा। अगर लोकली एग्जैक्ट। और अपने ऊपर लिमिटेशंस हैं काम तो करते ग्लोबल हैं, सोचना अपने जरूरी है बट अपने ऊपर काम भी करना है ताकि आपकी विजिबिलिटी ग्लोबल लेवल की विजिबिलिटी, बिल्कुल ठीक। अच्छा फराज साहब, आप थोड़ा सा प्लीज इसको एक जो सिस्टमेटिक वे होता है कि यूजुअली इसको गोल सेटिंग से जरा अलाइन करते हुए प्रायोरिटीज को सेट करने का हमें बताएंगे। जी सर, थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। और मुझे लगता है कि ना जो जो बेसिकली जो ड्रीम्स हैं उनकी गुंजाइश होती है ज़िंदगी में, लेकिन ड्रीम्स जो है ना वो ड्रीम्स ही रह जाते हैं अगर उनको आप गोल्स ना बनाएं और गोल सेट ना ना करें। बनाए, सही। बिकॉज इवेंचुअली लॉट ऑफ टॉक हर साल के शुरू में होती है, बहुत सारी जगहों पे हो रही होती है कि जी 2023 ऐसा था और 2024 में हम ऐसे करेंगे। एंड वी ऑल नो कि एक लिस्ट बनती है, मैं भी बनाता हूँ, शायद आप सब भी बनाते होंगे कि जी ये करेंगे, उसके बाद 2-3 महीने के बाद वो लिस्ट जो है वो गुम हो जाती है। उसकी वजह ये है कि वो बेसिकली जो इंटरनलाइज नहीं हुई, वो लिस्ट जो है वो किसी कॉपी पे लिखी हुई है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे इस वेबिनार से कुछ लोग नोट्स ले रहे होंगे, उसके बाद वो नोटबुक जो है वो कहीं इधर उधर हो जाएगी। तो मैं अमूमन कहता हूँ कि जब आप वेबिनार में जाएं, और एंड बाय द वे अटेंडिंग वेबिनार्स एंड अटेंडिंग सच फोरम्स इज एक्चुअली आल्सो वन ऑफ द recommended actions which you can perform to build your self awareness, to build your resilience against the challenges of 2024. So keeping that in mind, जब आप किसी वेबिनार में जाएं तो आप फिक्स्ड माइंडसेट के साथ अगर जाएंगे तो आप जो है वो थोड़ी देर के बाद आपका लर्निंग कर्व जो है वो ड्रॉप हो जाएगा, वो नोट्स गुम हो जाएंगे। सो माय रिकमेंडेशन इज कि दो चीजें हैं। पहली चीज ये है कि आप जो है वो उस नॉलेज को लिमिटेड ना रखें किसी एक शख्स के साथ, किसी एक सोर्स के साथ, और अपने आप को भी एक्सप्लोर करें जैसे मैंने सेल्फ अवेयरनेस की बात की, और दूसरों को भी सुने कि हाउ पीपल बिहेव इन सर्टेन एनवायरमेंट्स। सो देयर इज अ न्यू कॉन्सेप्ट व्हिच वी कॉल एज रोल मॉडलिंग। रोल मॉडलिंग और रोल क्लोनिंग में बड़ा फर्क है। वन ऑफ माय डियर कोलीग्स इन द इंडस्ट्री एंड फ्रेंड मिस्टर फरहाद करम अली, आई एम नॉट श्योर इफ ही इज लिसनिंग और maybe he will listen. The other day he sent me a very interesting document, and that document's title was that you know uh, role and role cloning. सो रोल मॉडलिंग और रोल क्लोनिंग जो है, आई एम नॉट श्योर कितने लोग इस कॉन्सेप्ट को समझते होंगे। रोल मॉडलिंग इज दैट व्हेन यू एक्चुअली मेक समबडी अ मॉडल, but if you start cloning that person like to like, you will not reach anywhere. So in context to 2024, when you are setting your goals आपके अपने होंगे। अगर आपने गोल्स भी उधार लेके बनाए हैं और आप 2024 में गोल्स को फॉलो कर रहे हैं तो यू विल डेफिनेटली नॉट रीच एनीवेयर। सेकंड पॉइंट इज कि जब आपके गोल अपने होंगे तो वो गोल इंटरनलाइज हुए हुए हों। और मैं चूंकि मेरा फील्ड जो है वो कोचिंग भी है, I do leadership coaching, and I of course do training programs, corporate training leadership programs. उसके अंदर एक इंतहाई अहम बात यह है कि जो वो आपके जो गोल्स आप जो अचीव करना चाहते हैं उनकी तादाद जितनी थोड़ी होगी उतनी मुनासिब है। अब कोई पूछेगा जी कितनी थोड़ी होनी चाहिए, तो एक्सपर्ट्स लाइक मार्शल गोल्डस्मिथ से कि इवन एक गोल भी काफी है काफी। मैक्सिमम। तो जब आप एक या दो गोल्स बनाएंगे तो वो आपको डेफिनेटली 12 महीने याद भी रहेंगे कि यार मेरे ये दो गोल्स।
हाँ उनके अंदर सब हेडिंग्स हो सकती हैं. सो इफ आई मे सम अप, तो आई वुड से कि जी जो आपकी जो गोल सेटिंग है उसके बगैर तो सारी डिस्कशन जो है और सारी की सारी सेल्फ रिफ्लेक्शन और सेल्फ अवेयरनेस जो है वो मीनिंगलेस है. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो गोल्स हैं वो ऑपरेशनली डिफाइन होने चाहिए, टाइमलाइन के साथ, स्मार्ट हों, स्पेसिफिक हों. एंड जितना ज़्यादा आप गोल को सेट करते हुए जितनी मेहनत करेंगे उतना ज़्यादा आपको आसानी होगी कि क्या रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल हैं to achieve those goals in the year 2024 and beyond. So this is how I feel. And a very important thing, so normally यहाँ पे कुछ questions मैंने देखे कि जी बहुत ज़्यादा emphasis है कि जी वो mentor के ऊपर और coach के ऊपर. तो my point is कि देखें जो सबसे ज़्यादा अहम बात है वो ये है कि जो आपका गोल है वो borrowed ना हो, वो आपका अपना पर्सनल गोल हो, उसके ऊपर आपने पहले खुद से रिफ्लेक्ट किया हो, और आप जो है सिर्फ एक सोर्स ऑफ फीडबैक जो है उसको ना लें. ताहिर हुसैन इधर जो है वो ही इज इन वन ऑफ द लीडिंग वॉइसेस इंटरनेशनली इन द कोचिंग डोमेन. And I was reading his comments, and very importantly, he highlighted that while you are looking for a coach, you must have more options, because जो feedback है वो past का है, बट फीड फॉरवर्ड जो है वो आपको फ्यूचर के बारे में बताता है. एंड माय लास्ट कमेंट वुड बी कि जो यू शुड सीक फीडबैक, you should actually seek feedback internally from your own self. How have I done, and what were the reasons, what were the motives about my, the things which I have achieved or which I could not achieve. मुझे याद आता है कि जब मैं कुछ ट्रेनिंग्स वगैरह करवाता हूँ, उसमें एक हम टूल यूज करते हैं, इसे कहते हैं आफ्टर एक्शन रिव्यू, AAR. So this is a very important and powerful tool which helps individuals to reflect, क्योंकि हमारा आज का टॉपिक जो था रिफ्लेक्शन पे भी था. It helps you to reflect, and it helps you to look at the things, how can I do things differently in future. Until unless you do not answer these two questions, so may it be 2024 or may it be 2075, there will be no difference. Hence, with this, I once again, I genuinely appreciate Arshad Saab, your efforts to bring such forums for the people live and even otherwise, when I'm sure this will be recorded and people can listen to it later on. So I believe that it's a great service which you guys are doing. And through this, आखिरी बस कमेंट में ये कहूँगा कि पाकिस्तान में लोकली वो ये बैरियर्स खत्म हो चुके हुए हैं कि अगर आप कह रहे हैं ना कि जी मैं पाकिस्तानी हूँ और मेरा क्या बनेगा, और मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि ये जो माइंड सेट है, ये जो ब्लाइंड स्पॉट है, ये किसी में भी हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, when I started my own consulting few years ago, after my corporate career for more than 2 decades, so I was skeptic about कि यार मैं कोचिंग की जो है सर्टिफिकेशन बड़ी बड़ी महंगी कर रहा हूँ और दोबारा से मैं वो सारा कुछ उसको रिफ्रेश कर रहा हूँ, तो ये मैं पाकिस्तान में तो इसकी वो मार्केट नहीं है. तो आई रिमेम्बर वन ऑफ माय मेंटोर्स, he opened this kind of new avenue in front of me, and he said that when you're talking about the field of coaching, I hear you're only talking about Pakistan. Why is that? The moment he said this sentence to me, that opened a complete new horizon. कि भाई मतलब मैं अपनी सर्विसेज जो है, why I am not thinking internationally. So जब उसने मुझे ये कहा कि यार तुम इंटरनेशनली देखो कि तुम वहां compete करो उस मार्केट में जाकर, लॉट ऑफ पीपल, क्योंकि तुम्हारा जो है ये एडवांटेज है कि तुमने इन रीजन्स में काम किया है, और हो सकता है बहुत से जो है वो लोग उसमें दे वुड लाइक टू हैव समबडी who is bilingual, who can speak in Urdu and who can also speak in English and stuff. तो कहने का मकसद है कि ब्लाइंड स्पॉट्स हम सबके होते हैं. We should seek feedback, and we should then look at the international horizons, because we have great talent, and we can present our services and our let's say talent to international market. थैंक यू फराज साहब. टाइम हमारा ख़त्म हो रहा है. गुफ्तगू बहुत दिलचस्प हो रही थी. जो आज हमने सीखा आप ही की गुफ्तगू से आगाज़ करते हुए कि सेल्फ, हम कौन हैं, मैं क्या हूँ, कहाँ खड़ा हूँ, मानने तो सही कि मुझ में कुछ खामी कुछ कमी है और मुझे उसको दूर करना है, तभी हमारा जो लर्निंग का प्रोसेस शुरू होता है. और जब हम गोल सेट करें तो डिज़ायर्स, ख्वाबों की एक लिस्ट ना बनाएं, 1-2 हों, हकीकी हों, प्रायोरिटाइज किया हुआ हो, और उसके लिए कोशिश हो, और उसके लिए रिसोर्सेज. और ख़ास तौर पर मैंने ये भी नोट किया है कि सम टाइम्स आपको अपने दोस्त बदलने की ज़रूरत होती है, जो आपको नेगेटिवली हैमर कर रहे होते हैं. कुछ नहीं होना, इस मुल्क में कुछ नहीं हो सकता, देख लो ये हो गया वो हो गया. इसी मुल्क में लोग बिलियनर्स भी हैं,
और इसी में लोग जॉब्स भी ढूंढ रहे हैं, और ऐसे भी हैं जिन्हें दूसरे दिन जॉब्स मिल जाती है। कहीं ना कहीं फ़र्क है जो हमें अपने ऊपर मेहनत करने की ज़रूरत है। यही डॉक्टर साहब ने हमें बताया कि आप अगर लोकली फ्रस्ट्रेट हैं तो यू कैन लुक, अगर आप में कुछ है एंड यू आर क्लेमिंग यू आर समवन, तो ग्लोबली आ जाए, आपको वहाँ उसमें हो जाएगा। टेक्नोलॉजी भी आपकी हेल्प करेगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सैयद उज़ैर साहब, योर प्रीशियस टाइम। जनाब खुर्रम साहब, मोहतरम फराज असलम साहब, आपको हम बार बार ज़हमत देते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड वी एंड ओवर हियर। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।